नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जिंदल, सोशल ऑडिटर and IBBI registered valuer institute in financial assets. I have taken retirement from the syndicate bank and worked with Canara. So a good experience in banking sector and other sectors too. So we shall discuss today on chapter 5, social audit and social auditors. Evaluation of social audit. कहाँ से आए? The concept of social responsibility of enterprises has progressed rapidly in the last years. An organizational performance in relation to the society in which it operates, its impact on the environment has become a critical part of measuring its overall performance and its ability to continue operating. In India, the Gandhian philosophy of trusteeship captures the business responsibility towards the society. Tata has started this work long back, even before the independence. The philosophy of giving back to the society has been an integral part of the culture, which has also been imbibed in traditional Indian businesses since time immemorial. तो हम लोगों में दान देने की, समाज को साथ में लेने की पुराने जमाने में हमने देखा है और आज भी देखते हैं। कई लंगर लग रहे होते हैं, कई प्याऊ लग रहे होते हैं, कुछ लोग धर्मशालाएं बनवाते हैं, कुछ लोग समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं। तो ये सब यही इसीलिए होता है कि कोई भी आदमी अंडर प्रिविलेज ना रहे, अंडर सर्व्ड ना रहे। Responsible business conduct is a globally recognized concept founded on the idea that business can perform better when engaged in revitalizing the society from which they extract resources for production. So responsible business conduct जो है इसका कंसेप्ट है कि अपनी सोसाइटी को रिविटलाइज करते रहिए, जिससे हम रिसोर्सेज लेते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं, उसको गिविंग बैक करना जरूरी है। यदि हमारी पॉपुलेशन स्वस्थ रहेगी, अर्नड रहेगी, तो बिजनेस भी उतनी तेजी से चलता रहेगा। The National Guidelines on Responsible Business Conduct 2018 (NGRBC) encourage businesses to contribute towards broader development goals while seeking to be economically viable. So NGRBC कहता है कि आप बेटर डेवलपमेंट गोल्स की तरफ भी बढ़िए और अपने आप को इकोनॉमिकली वाइबल भी रखिए, प्रॉफिट भी कमाइए और प्रॉफिट बांटिए भी। समाज का भला होगा तभी कंपनी का भला होगा। Development of sustainability reporting standards like Global Initiative GRI ISO 26000, Guidance on Social Responsibility, Principles of Responsible Investing PRI, Sustainability Accounting Standard Board are contributing significantly to our understanding of social responsibility. India is a signatory of global initiatives like the Sustainable Development Goals adopted by the United Nations in 2000. These global initiatives address universal social development issues and call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity. With sharp focus on social impact of business, standards, frameworks, and guidance on social auditing have become essential. So these are the essential requirement कि social impact होना चाहिए बिजनेस का, स्टैंडर्ड्स उसी तरह के होने चाहिए, फ्रेमवर्क उसी तरह का होना चाहिए और गाइडेंस ऑन सोशल ऑडिटिंग भी होनी चाहिए। मॉनिटरिंग, measuring and reporting the social performance of enterprises have emerged as a regulatory requirement. So nowadays, it's a regulatory requirement that
you have to monitor, measure, and report the social performance in your business. Based on the guidance in NGRBC, business responsibility sustainability reporting is a compliance requirement for top 1000 companies in India. So, जो top 1000 companies हैं, उनको NGRBC business responsibility and sustainability reporting करनी पड़ेगी. The fact that NGRBC is detailed with the United Nations guiding principles on business and human rights, UNGP makes the BRSR disclosure globally relevant. In India, the concept of monitoring and evaluation of social development activity and performance audit of flagship social development program has been active for national social development initiatives like National Rural Health Mission, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, etc. etc. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) was launched in 2006. It is pegged as the most ambitious anti-poverty program, which guarantees 100 days of unskilled manual labor for adult members in the rural households. So, rural households में यदि किसी को कुछ भी काम नहीं मिलता है, परंतु यह 100 डेज की गारंटी है और 100 डेज में वो पैसा कमा करके कम से कम 365 दिन तो भोजन की व्यवस्था हो ही सकती है. The Gram Sabha is expected to monitor the NREGA/MNREGA and conduct social audits of all NREGA projects implemented in the Gram Panchayat. तो ग्राम सभा को सोशल ऑडिट करना है. With the introduction of companies social responsibility policies amendment rule 2020 social impact assessment came into the preview of the compliance. In the SAD rules, in Rule 8 of Sub-Rule 2, following sub-rule is inserted, namely, a company having the obligation of spending average CSR of rupees 5 crore or more in the 3 immediately preceding financial in pursuance of subsection 5 of section 135 of the Act shall undertake social impact assessment of the CSR projects or program and shall disclose details of the same in the annual report on SCSR. तो एनुअल रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी जिसका 5 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रॉफिट है पिछले 3 सालों में एवरेज, उसको ये करना पड़ेगा. इसके 2-3 पॉइंट और भी हैं, वो हम अलग जाके पढ़ सकते हैं. मींस नंबर 1, जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से ऊपर है, टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से ऊपर है, या प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, ये सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में आता है. और इनमें से तीनों कंडीशन एक्सक्लूसिव हैं, तीनों में से एक पूरी होनी चाहिए, तो उसको पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2% CSR में खर्च करना होता है. With the forthcoming launch of Social Stock Exchange, social audits has matured with well-defined deliverables. For the first time, the development social audit standards by ICI has been defined in the required social audit procedures for 16 thematic areas of the social audit. तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड बनाए हैं. इसके बाद इनको इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ ने भी सोशल स्टैंडर्ड इसी पैटर्न पे बनाए हैं और दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं. नाउ definition of social audit. There are many definitions of social audit which are emerging. Some of more acceptable ones are listed. Number 1, social audit is the process of reviewing and verifying of social account. So it is a process of reviewing and verifying of social account at the end of each social accounting period. देखो भैया ये वाला क्वेश्चन है, at the end of each accounting period, ये आता है, यहाँ पर आ जाएगा. Social audit is the process of reviewing and verifying social accounts
नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, एट द एंड ऑफ ईच सोशल अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, एट द अकाउंट ऑफ द कैलेंडर पीरियड और एट द अकाउंट ऑफ द इन बिटवीन। तो इस तरीके से आंसर आपका होना चाहिए एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग पीरियड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The term social audit is sometimes used generically for the concept or for the whole process. A social audit is a formal review of companies' endeavors, procedures, and code of conduct regarding social responsibility and company's impact on the society. A social audit assesses how well the company achieves its goals and social reporting in benchmarks. यदि सोशल और सोसाइटी के कुछ बेंचमार्क्स हैं, एक इंस्टीट्यूट ने कुछ बेंचमार्क्स दिए हैं, गवर्नमेंट के कुछ बेंचमार्क्स हैं, तो उसको सोशल ऑडिट देखता है कि ये लोग उन बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना खरा उतर रहे हैं। The NREGA defines social audit as reviewing official records and determining whether state reported expenditures reflect the actual money spent on the ground. तो नरेगा सोशल ऑडिट ऐसा करता है कि गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया है वो ग्राउंड पर कितना पहुंचा है। एक बार जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि यदि सेंटर से कोई 1 रुपया चलता है तो गरीब तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ऑडिट की स्थापना की गई है और देखा गया है कि देखा जाता है कि सेंटर से चला हुआ 1 रुपया ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते कितना खर्च होता है। Social auditing is a process that enables an organization to assess and demonstrate its social, economic, and environmental benefits and limitations. तो ये प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन को अनेबल करता है असेस और डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि इसका सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंट बेनिफिट्स कितने हुए हैं और लिमिटेशंस क्या क्या। It measures the extent to which an organization lives up to the shared values and objectives it has committed. तो जो उसने ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं, जो सोसाइटी से कमिट किया है, जो क्या वैल्यूज दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। Social auditing assesses the impact of an organization and non-financial objectives through systematically and regularly monitoring its performance and the use of its stakeholders. So social auditing assess करता है impact को organization की नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स जो हम सिस्टमेटिकली रेगुलेटरी मॉनिटर करते हैं इसकी परफॉर्मेंस को और in view of the stakeholders. Social audit is an independent evaluation of the performance of an organization as it relates to the attainment of its social goals. कितने हुए हैं भैया? 100 का हमने टारगेट किया था, 90 हुए, 70 हुए, 80 हुए, 85 हुए, कितना हुआ? It is an instrument of social accountability of an organization. In other words, social audit may be defined as an in-depth scrutiny and analysis of working of any public utility vis-a-vis its social values. The social audit process is intended as a means of social engagement, transparency and information communication, leading to greater accountability of decision makers, representatives, managers and officials. तो ये उनकी परफॉर्मेंस को शो करता है। The underlying ideas are directly linked to the concept of democracy and participation. So ये सीधा सीधा हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पार्टिसिपेशन की बात। सोशल ऑडिट नेटवर्क यूके डिफाइन सोशल ऑडिटर एज, यूके ने क्या डेफिनेशन दी है भैया देख लेते हैं। ए पर्सन हु चेयर्स द सोशल ऑडिट पैनल and manage the audit process at the end of each cycle, including the examination of the data and the sample checking to the source, the audit trail, and issuing social audit statement. So, social audit network, social auditor क्या है कि एक आदमी है और
सोशल ऑडिट पैनल को चेयर करता है, मैनेज करता है ऑडिट प्रोसेस को और बाद में उसकी रिपोर्ट देता है. SEBI defines a social auditor as an individual registered with a self-regulatory organization under the purview of the Institute of Chartered Accountants of India. To be qualified as social auditor, an individual must qualify for a certification program conducted by the National Institute of Securities Market (NISM) and hold a valid certificate. तो एक एग्जाम देना होता है NISM के द्वारा, फिर SRO के ऊपर रजिस्टर कराना होता है और आप सोशल ऑडिटर कहलाने. Difference between social audit and financial audit. So there is a difference in social audit and financial audit. The distinguished features between the social audit and financial audit are given below. Features of the financial audits are as follows. Number one, involves audit of financial statement and transaction. तो फाइनेंशियल ऑडिट क्या है कि अपने आप को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व करता है. Covers non-financial matters limited only to the aspects that provide additional information to stakeholders of the business who are mainly interested in the entity's financial. तो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स में वहीं तक वह इंटरफियर करता है जब तक कि उसे एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है और जो फाइनेंशियल स्टेटस के साथ डायरेक्ट जुड़ी होती है. Financial auditors are done keeping in mind the objective of issuing an opinion on the state of the financial affairs or deals mainly with the study of the financial data. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. और सोशल ऑडिटर हम क्या क्या करते हैं? लुक एट द इम्पैक्ट कॉज्ड ऑन द सोसाइटी बाय द ऑर्गेनाइजेशन. तो कितना इम्पैक्ट हुआ, उसने क्या किया. Takes an outside in approach of looking at the organization, dealing more with how the non-financial stakeholders view the business rather than how the managers, owners of the organization plan it to be. ये आउटसाइड इन अप्रोच है. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, इसको ध्यान रखिए. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि हम ये देखते हैं कि हमने क्या प्लान किया सोसाइटी के लिए. यह नहीं देखना है बल्कि ये देखना है सोसाइटी ने इसको कैसे दिया, सोसाइटी ने अपडेट किया या नहीं किया और सोसाइटी हमें क्या दे रही है फीडबैक. Deals with study of social impact parameters, most of which can be gathered from outside the organization which is being audited. Involves the stakeholders of enterprise and adopts a triple bottom line approach. So ये triple bottom line approach is very very important. इसको ध्यान देने की जरूरत है. So this is the difference between the financial and social audit. Number one, perspective. फाइनेंशियल ऑडिटर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देखता है जबकि सोशल ऑडिटर मल्टी पर्सपेक्टिव है. इसके अंदर कुछ हद तक फाइनेंस भी है और कुछ मेन इंटेंट सोशल है और इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस में करने पड़ते. Stakeholder doesn't consider the larger ecosystem of stakeholders, concentrates on shareholders. तो लार्जर जो है इकोसिस्टम के ऊपर ध्यान नहीं देता है, सिर्फ शेयर होल्डर्स के ऊपर ध्यान देता है. While social ecosystem is very important, all stakeholders are important, including the shareholders, funders, and finance, or the intended users or the intended geographers. Eligibility क्या है? Financial auditors are chartered accountants, while social auditors are chartered accountants and graduates of any discipline with experience and certification as prescribed by the SRO/SEBI. Aspects क्या है? ये फाइनेंशियल है जबकि सोशल ऑडिट में इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट. कंपैरिजन क्या है? विद द फर्म टू बी ऑडिटेड एंड ऑडिटेड, while
within the organization plus the external standards plus the other comparative organizations की अपने फाइनेंशियल की तरफ ध्यान देना ही है, बट सिमिलर एनपीओज क्या कर रहे हैं उनके द्वारा भी देखना है कि हम उनके स्टैंडर्ड पर खरे उतर रहे हैं या नहीं. Impact. Only financial performance is the key metric. While here social impact, social performance as well as financial audit are the key metrics. Methods क्या हैं? Standardized methods हैं. While method vary as per the project and thrust areas of the organization. So it is very very important line. यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है भैया कि सोशल ऑडिट में जो मेथड है वो वेराई करते हैं पर प्रोजेक्ट and trust area of the organization. This is the answer. Indicators deals primarily with the quantitative indicators, while here social may both qualitative and qualitative indicators are important. Audit conclusion may reflection of financial matters of the enterprises, while in the social may reflection of the social impact of the enterprise. Social impact क्या हुआ, कितना हुआ, ये सब चीजें देखनी. So this is for today. We shall discuss in the next video the principles of audit. बहुत बहुत धन्यवाद for your patience listening. नमस्कार.